Hello students, welcome back to maths class. So in the previous class you completed your 8th chapter, that is quadrilateral, यानी कि आपने complete किया chapter चतुर्भुज. आपको जो 9th chapter है that is areas of parallelogram and triangles, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. तो हम आज सीखेंगे चैप्टर 10 यानी कि सर्कल्स, दैट इज वृत्त. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ऑल द टर्म्स व्हिच इज रिलेटेड टू सर्कल्स. सो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्कल? आई एम श्योर यू रिमेंबर व्हाट अ लाइन इज. व्हाट वाज अ लाइन? अ लाइन is a collection of points which has been arranged in a straight manner, right? That means if many points are arranged in a straight manner, then it is a line. Similarly, if we have a collection of points from a fixed point, with a fixed distance, then it is a circle. Once again, a collection of infinite points from a fixed point with a fixed distance is called a circle. वृत्त किसे कहते हैं? बिंदुओं का एक समूह जो कहाँ से आता है? एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी के साथ, तो इसे हम कहते हैं वृत्त. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस फिक्स्ड पॉइंट, ये जो आपका स्थिर बिंदु है, इसे हम कहते हैं सेंटर और हिंदी में इसे कहते हैं केंद्र. ओके, ये जो फिक्स्ड पॉइंट दैट इज योर सेंटर या फिर केंद्र, और ये जो आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है यानी कि स्थिर दूरी है, इसे हम कहते हैं रेडियस और हिंदी में इसे कहते हैं त्रिज्या. Okay children, I hope this part is clear. So what is radius? Radius is actually the distance, but we can define it. How will we define a radius? A radius is a line segment from the center to any point on the circle, and you know that so many points are there. So how many radius can you make? You can make infinite radius. आप अनगिनत त्रिज्या बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ बनाइए, यहाँ बिंदु है, यहाँ बनाइए, तो आप बहुत सारे रेडियस इसमें, त्रिज्या इसमें बना सकते हैं. एंड अनदर थिंग इज दैट व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ईच रेडियस? हर डिस्टेंस का जो लंबाई, हर त्रिज्या का जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? A line segment from the center to any point on the circle. हिंदी में क्या कहेंगे? एक रेखाखंड जो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाए या जोड़े, उसे हम त्रिज्या कहते हैं. ओके, नाउ let's move on to the next one, that is it's done, it's done, it's done. Next is circular region. Now children, this is a plane, right? On this plane, if I draw a circle, if I am drawing a circle in this plane, this circle is dividing this plane into 3 parts, okay? So the circle is dividing this plane into 3 parts. What are they? You can see this is the inside of the circle. This is your interior of the circle, and this is the outside of the circle, that is exterior. Okay, so which are the 3 parts? Exterior, interior and the circle itself. These are the 3 parts. बच्चों देखिए, ये एक तल है. अगर इस तल पर हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं तो इट इज 3 भागों में बढ़ जाता है. पहला है आपका वृत्त के अंदर का भाग, जिसे हम कहते हैं अभ्यंतर, और फिर आता है आपका बाहरी भाग, उसे हम क्या कहते हैं?
बहिर्भाग। ओके, तो यानी कि तीनों भाग कौन से हैं? आपका बहिर्भाग जो कि बाहरी एरिया है, आपका वृत्त और आपका अभ्यंतर। Now what do you mean by circular region? Circular region means the circle and the interior of the circle together forms the circular region. हिंदी में इसे कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र माने ये जो आपका वृत्त है और उसका अभ्यंतर दोनों मिलकर बनता है आपका वृत्तीय क्षेत्र। कोई भी आकृति के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, सो व्हाट वुड बी द ट्रायंगुलर रीजन? ट्रायंगुलर रीजन मीन्स द ट्रायंगल एंड द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर रीजन। और इसे त्रिभुजीय क्षेत्र कब होगा? जब आप त्रिभुज और उसका अभ्यंतर मिला के लेंगे, तब वो बनता है आपका त्रिभुजीय क्षेत्र। फाइन स्टूडेंट्स, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now, this is a circle. You know that a circle is made up of infinite points. Now I am taking 2 points over here. Let this be your A and this be your B. Okay? If I join these 2 points, मैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रही हूँ। ये जो आपका लाइन सेगमेंट है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। It's called कॉर्ड और हिंदी में कहते हैं जीवा। ओके? Now ये जो कॉर्ड है बच्चों, इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं, in certain words, in certain parts of the world it's called chord and in certain parts of the world it's called chord. जैसे कि आपके साइंस में कैमिलियन है, कहीं कहीं पर उसे कैमिलियन कहा जाता है, तो कहीं कहीं चैमिलियन। ओके, सो आई वुड प्रिफर टू कॉल इट एज अ chord. ओके, नाउ व्हाट इज अ chord? A chord is a line segment that joins any 2 points on a circle. जीवा वो रेखाखंड है जो आपके वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाए। Now, this is a chord. Okay. Now, I'm putting a point here. I'm putting a point here. Can I join it? Yes. This is a chord. From here to here. This is a chord. Again, from here to here. This is a chord. So how many chords? आप कितना जीवा इसमें बना सकते हैं? आप यहाँ पर भी अनगिनत जीवा या कॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉर्ड्स हैं, all are of different length. They are not equal. Okay, that's what you have to remember about the chord. Now, suppose this is your center. Okay, now you know that this is a chord, right? This is a chord. If this chord passes through the center, suppose I am drawing a chord here and again another chord, it's here, these are the 2 points. We are drawing the chord, but it is passing through the center. If a chord passes through the center, that line segment is called a diameter, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यास। यानी कि अगर एक जीवा आपके केंद्र से होते हुए जाए, तो उस रेखाखंड को या उस जीवा को हम कहते हैं व्यास। ओके, नाउ another thing that you have to remember is, I told you that this is a chord, right? This is a chord, this is also a chord, this is also a chord, this is also a chord, and this is also a chord. You can see here which is the longest chord. This is your longest chord, which means we can say that the diameter of a circle is the longest chord. कह सकते हैं कि व्यास एक वृत्त का सबसे लंबा जीवा होता है. This is one important point that you should know. Okay.
Now how many diameters can you draw here? Suppose from here, let's rub off this chords. Now, I can draw a diameter this way. Yes, absolutely. From here. So, how many diameters can you draw? Again, you can draw infinite number of diameters. आप अनगिनत व्यास बना सकते हैं और ये सभी जो डायमीटर्स हैं, ये जितने भी व्यास हैं, सबकी जो लंबाइयाँ हैं वो सब बिल्कुल बराबर होंगी, right? This is okay. Second point is over. Firstly, diameter, that it is the longest chord of a circle. Secondly, that you can draw infinite number of diameters on a circle and all of them are equal to each other. Okay. The next point, children, suppose this is your circle. Okay. This is your diameter, right? Now, from the center till here, look at this. What is this, children? This is your radius, a line segment from the center to any point on the circle. So, this is your radius. Again, here also from center to this point, this is also radius. So, what does that mean? A diameter is made up of two radius. देखिए, ये व्यास जो है दो त्रिज्याओं से बनी हुई हैं, ठीक? So, how can we get a formula here? We get it as diameter is equal to 2 into radius, यानी d is equal to 2 into r या 2r. This is one important formula. Of course, you all know it. This is how we get. Okay, children? So, diameter is made up of two radius and hence we get diameter is equal to 2 into radius. I hope, children, till here it's clear. Now, let's move on to the next topic, that is arc, यानी कि छाप. Now, this is a circle. Another circle, I am taking 2 points here, let it be A and B. Okay? Now, here you can see that this is one part of the circle and this is one part of the circle, isn't it? This is a piece of a circle, right? So, this piece of a circle is called arc. Is called arc, okay? Arc. जिसे हम हिंदी में कहते हैं छाप. यानी एक वृत्त का एक भाग को हम छाप कहते हैं. So, this is a part, this is a part, this is a part, this is a part. ये सब आपके छाप हैं. अब मैं इसे लिखूंगी कैसे? I will write it as arc AB. ठीक है? इसे हम लिखेंगे arc AB. और ये जो आप लेकिन अगर ये एक पीस है, ये भी एक पीस है ना? तो इस छाप का आप नाम कैसे लिखेंगे? इस आर्क का नाम आप कैसे लिखेंगे? You will write it as arc AB, right? Actually, you don't have to write again arc because this itself means that it is arc. But for you, for this time, I'm just writing the words here, children. Now, both cannot be same, right? Because you can see that this is a small piece and this is a big piece. So, the small piece is called minor arc. Minor माने छोटा. Minor arc AB and this bigger one is called major. Is called major arc AB. अब हम हिंदी में अगर इसे कहें, ये जो आपका छोटा आर्क है उसे हम कहेंगे लघु, लघु छाप. तो लघु छाप AB. ओके? और मेजर माने दीर्घ, दीर्घ छाप AB. Okay, children? So, arc is a piece of a circle and you can have it as minor arc also and you can have it as major arc also. Fine? Now, suppose here these points are not here.
Suppose this is your center and I am taking both the points here, A and B. Okay? So now this is your arc AB and this is also your arc AB. Is it minor or is it major? No, both of them are equal. When both the arcs are equal, it's very clear that it lies on the diameter. Okay? In such a case, such an half arc, equal halves, this becomes a semicircle. Now this has become a semicircle, semicircle. A diameter divides a circle into two halves or into two semicircles. Semicircle को हम हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त. ठीक है बच्चों, जब छाप दोनों तरफ का बराबर होता है तो वो होता है सेमीसर्कल. ओके, और सेमीसर्कल में से कौन बांट रहा है? आपका व्यास बांट रहा है. ठीक है. Now if I have to talk about semicircular region, as I told you circular region, the same way children, what would be the semicircular region? The semicircle and the interior of the semicircle is called the semicircular region. Now the next topic is circumference of a circle. This circumference is nothing but the perimeter of the circle. Now this is your circle. When we learnt about the rectilinear figures, this is a rectangle, right? What is the perimeter of a rectangle? What was the meaning of perimeter? Sum of all the four sides. That means if I am marking a point here, this plus this plus this and plus this together, it's the perimeter of this figure, isn't it? The same thing here also children. If I am marking a point over here, the total distance from here, it covers the whole distance. This is the perimeter of the circle, and the perimeter of the circle has been given a special name, that is called circumference. Okay, when we talk about the perimeter of a circle, we should call it as circumference of the circle, and for all the rectilinear figures, it's perimeter of the circle. In Hindi, it's called paridhi. So what is the definition of circumference? The complete distance of the whole circle is called circumference. परिधि किसे कहते हैं? आपका वृत्त का जो कुल लंबाई है उसे कहते हैं परिधि. ओके, नाउ अगला जो आपका टॉपिक है, सपोज A and B. This is your A and this is your B. Okay. If I am joining these two points, what is this? This is a chord that we have already learned, है ना? ये क्या है? आपका जीवा है. आप देख सकते हैं, this chord is actually dividing this circle into two parts. This is one part and this is one part, right? Now this area which is covered by a chord and an arc is called segment. It's called segment. यानी कि वृत्तखंड. वृत्तखंड माने क्या होता है बच्चों? जो क्षेत्र आपके जीवा और छाप के बीच में हो उसे कहते हैं वृत्तखंड. अब यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपका जीवा और छाप के बीच में है और ये भी आपका कॉर्ड और आर्क के बीच में है, यानी कि दोनों ही क्या है? आपका सेगमेंट है. तो हमें कुछ तो डिफरेंशिएट करना होगा, इसलिए ये जो छोटा एरिया है उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट. ओके, और ये जो आपका मेजर है, जो बड़ा एरिया है, ये दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. और हिंदी में माइनर सेगमेंट को क्या बोलेंगे? माइनर माने लघु, तो हम क्या लिखेंगे इसको? लघु वृत्तखंड. और मेजर सेगमेंट को क्या कहेंगे हम? दीर्घ वृत्तखंड.
So this is what a segment is. Okay children? So segment is the area enclosed between the chord and arc of a circle. जो क्षेत्र आपका जीवा और छाप के बीच में स्थित हो उसे कहते हैं वृत्तखंड. Okay? Now let's see the next topic. Now this is your circle, okay? From this circle, I am drawing two radius, this and this, okay? This is one radius and this is one radius. You can see that this region is being covered by two radii, two radius and one arc. This region which is enclosed by two radii and an arc is called sector. Is called sector. जो क्षेत्र आपकी दो त्रिज्याएं और एक छाप के बीच में स्थित हो उसे कहते हैं त्रिज्य खंड. Okay? त्रिज्य खंड. Now again here also children you can see this is also a sector and this is also a sector. This is also in between this major arc and these two radii, isn't it? So what can we say here? The small area is called minor sector and this area is called, this region is called major sector. और ठीक जैसे हमने पहले वाला में किया था, आपका हिंदी में इसे क्या कहेंगे? माइनर माने छोटा, छोटा को हिंदी में क्या कहेंगे? लघु. So this is your लघु. लघु त्रिज्य खंड. और आपका जो मेजर सेक्टर है, मेजर को क्या कहेंगे? दीर्घ. तो हम इसका क्या लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड. Okay children, so what is a segment once, what is a sector once again? The area, the region enclosed by between two radii and an arc of a circle is called sector. आपका त्रिज्य खंड क्या होता है? जो आपका क्षेत्र क्या के बीच में आएगा? आपके दो त्रिज्या और छाप के बीच का जो आपका क्षेत्र है उसे कहते हैं त्रिज्य खंड. आशा करती हूँ कि आज जितना भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया आप समझ चुके होंगे बच्चे. सो चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू आर क्लियर विद ऑल द टर्म्स दैट वी स्टडी टुडे. So based on all these terms, you have your exercise 10.1. There are just two questions in it, that is fill in the blanks and state true and false. Everything is related to what we learned today. I'm sure you can do it by yourself. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बच्चों प्रश्नावली 10.1 जो है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपका fill in the blanks है वो सब आप खुद से कर पाएंगे बच्चों. आपको बस अगर आपने आज का क्लास ध्यान से सुना है तो आप ज़रूर कर पाएंगे. और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए बच्चों. हम मिलेंगे अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक सी यू.